हेल्प ढूंढना चाहते हो. So I hope with this I have answered this part of the question. And the second part, can you go overboard with personal promotion? Now this is a tricky question. So a lot of times you feel कि यार ये तो दिन भर Instagram पे, Facebook पे, WhatsApp पे अपने पोस्ट डालते ही रहती है, आत्मस्तुति करते ही रहती है. Maybe you are someone who has actually achieved so much and you should be posting about all these things. So no, there is no such thing as going overboard with your publicity. But of course you also have to take feedback, and feedback will always not be कि आप मुझे बताओ मेरे पोस्ट आपको कैसे लगे. Feedback will probably be, you see that a lot of time people are not engaging with your content, then you feel कि थोड़ा मैं tweak करती हूँ, experiment करती हूँ, हर दिन 5 पोस्ट के बदले में 2 पोस्ट ही डालती हूँ. अगर वो 2 पोस्ट मीनिंगफुल है वर्सेस 5 पोस्ट जो ओके है, then you know that putting 2 excellent posts is always better than putting 5 mediocre posts, and that is going to help you build a stronger personal brand. So I hope that Mama have answered this question well for you. Yes, ma'am. Now the second question is, what will be the best way for marketing or networking? And the question is from Dr. Dipanshu Rana. Okay. So I hope by marketing we mean self-marketing, because that is what we have covered. हमने team building और खुद की networking. These are the only things that we have covered in today's session. So the best ways for networking, as I mentioned, those 2 channels, online and offline, and उसके साथ साथ being present, being available for your network. Networking is not a one-way street. नेटवर्किंग में आप सिर्फ अगर मांगोगे, मुझे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये हेल्प चाहिए, इफ यू आर ऑलवेज ओनली गोइंग टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ योर नेटवर्क कि जब आपको हेल्प चाहिए तब आप आ जाते हो, बाकी टाइम आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. व्हेन यू कम टू आस्क फॉर हेल्प, you also have to offer help. It is a two-way street. It is a relationship. So you cannot be ghosting people. आप आके गायब हो गए, वैसा चलेगा नहीं. So I think the best way for networking is actually that: be your true self, add value to your network, keep learning new things. And learning is as simple as आप newspaper पे अच्छे articles पढ़ो, आप अच्छी books पढ़ो, आप अच्छे videos देखो. There are so many resources which are available for us today. आपको जो मोड में पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, सुनना पसंद है, देयर आर पॉडकास्ट. आपको देखना पसंद है, देयर आर यूट्यूब वीडियोस. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अस, that if we still don't come out with good ideas, or if we still don't come out with any thoughts of our own, any comments of our own, then I think we are just being lazy. Yeah, we are not motivated enough to develop our network, or we are not motivated enough to actually widen our network. नेटवर्क सबका ही होता है. नेटवर्क में 4 लोग भी हो सकते हैं, 4,000 लोग भी हो सकते हैं, 4 लाख लोग भी हो सकते हैं. द पॉइंट इज 4 लोग से 40 लोग से 100 लोग, धीरे 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 करके हमें हमारा नेटवर्क एक्सपैंड करना है. एंड यू हैव टू बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स टू योर नेटवर्क. So the more you keep adding value to your network, the more there will be other networks who will want you to be part of their networks. लोग आके बोलेंगे कि अरे सर आप हमारे इसमें आके मिलो, आप हमसे बात करो, आप आके हमारे बच्चों को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज दो. So there are so many ways through which आपका network drastically expand होगा if people see you are someone who's adding value to them. So I hope this answers the question, sir. Yes, ma'am. One more question, ma'am. Dr. Subhashit Devnath is asking what to do if the person on the other side is not showing any interest to communicate. Okay. So again, with this question, I'm assuming कि हम email या LinkedIn की बात कर रहे हैं. So generally on LinkedIn, दोनों प्लेटफॉर्म्स फ्री है. तो सबसे पहले अगर पहली बार कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो हमें भी थोड़ा ढीठ हो जाना चाहिए. And we should not, think so much, oh, this person is not replying to me, and, ja. No, it cannot work that way. We have to understand that people are busy in their lives. And if this other person is someone who is much more senior, who is much more busier than you, then we need to understand that we have to give them space and
हम एकदम ऐसे पीछे नहीं कि आज हमने भेजा तो अगले 10 मिनट में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो कमिंग टू ईमेल्स, if you have sent out an email and if this person is not responding to you, send up and follow up email probably in the next 48 hours, 2 दिन में. I think if you send out an email in the next 2 days, it is not too early and it is not too late. So when you send out an email in the next 2 days, dear sir or dear madam, I think this mail may have skipped your view. So a gentle reminder to go through it, and whatever you want to say. So उस type से आप भेज सकते हो. Along with that, if you feel this person is not very receptive on email and probably very receptive on WhatsApp or on phone, and maybe you don't have their phone numbers yet, so you could also put it into that email that, sir, ma'am, if you can be kind enough to share your contact details so that I can, explain this idea in detail on your through WhatsApp or probably drop you a text. So something of that form. तो अगर ईमेल पे आपको लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम और कौन से जरिए से इन तक पहुंच सकते हैं. We need to identify them. We need to have patience. But once you have tried, so आपने एक gentle reminder भेजा, आप 2 gentle reminder भेजो. Maybe if you feel, it's a judgment call, आप किसको मेल भेज रहे हो. If you feel आप third gentle reminder तक भेज सकते हो. But even after the third gentle reminder, if the person is not responding, then I think ये अब हमें समझना पड़ेगा, this person does not want to reply to this message, to this request. So maybe through some other channel, आप उनके पहचान के किसी को अगर जानते हो तो आप या तो उनको बोल सकते हो कि मैंने उनको बोला था, आप जस्ट उन तक अगर बात पहुंचा सकते हो, या उनको रिमाइंड कर सकते हो, that can help you out. Or probably just move on to the next person. You have to then accept it gracefully कि they don't want to talk about it, they don't want to get involved in this, and then move on gracefully to the next person. In terms of the LinkedIn, अगर आपने LinkedIn पे किसी को कुछ भेजा है and that person is not replying, now there are very sneaky ways of which how you can get their attention. One way what you can do is probably अगर उनका कोई पोस्ट, उनने जो लास्ट 2-3 पोस्ट किए थे, आप उन पोस्ट पे जाके लाइक और कमेंट करना शुरू कर दो. अपने आप उनको दिखेगा और फिर मे बी दे विल रिमेंबर, अरे हाँ इसने मुझे ईमेल भेजा है, या अरे हाँ इसने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज भेजा है. एंड बिकॉज यू हैव इंटरैक्टेड और यू आर एंगेजिंग विद देयर कंटेंट, उनको पता है कि आप लाइक कमेंट कर रहे हो, तो शायद there is a very good chance that this person may send you a reply, positive or negative, whatever. But through this method, I think it's a very sneaky but a very nice and a very good way of getting people's attention. कि आप उनके लिंक्डइन के पोस्ट पे जाके लाइक कमेंट कर दो, तो अपने आप उनको याद आ जाएगा कि आपने उनको ईमेल या लिंक्डइन मैसेज भेजा था. So sir, I hope this answers your question. Yes, ma'am. Ma'am, one more question from same from Subhashish, Dr. Subhashish Devnath. He's asking in a different way. You already answered well, but I will take this question. Sometimes we do not get any reply of our mails, and I feel hesitate to send a second mail or WhatsApp messages. Shall we continue sending the message or mail to them? Yes, so as I said, पहला gentle reminder के लिए, if you feel it is urgent, तो आप उसी दिन भेज दो gentle reminder. But अगर आपको लगता है कि बहुत urgent नहीं है, now urgency is subjective. Something that is urgent to you is obviously not urgent to them, to your receiver. But if you feel this is important and this thing can make or break, then leave no stone unturned. फिर आप उनको WhatsApp पे, फोन करके, ईमेल पे करो. बट रिमेंबर, ऐसे मौके आपके पास लाइफ में कम ही बार आएंगे. अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट आपने उनको हर तरीके से घेर लिया एंड आपने उनको कि नहीं मुझे बता, so maybe the person will probably not try to help you the next time. So these are like those वो जीनी वाली विशेस जैसी होती है कि 3 ही है हमारे पास अवेलेबल एंड you have to choose it very carefully. So don't feel hesitant, because if you are reaching out to them through a formal channel like an email or like a LinkedIn, it's okay to keep sending them gentle reminders up to 3. If it is WhatsApp, then be aware that you are sending them WhatsApp in the timings which are
kind of business timings. So maybe between 9 a.m. 10 a.m. से लेके शाम को 7 बजे तक. Don't send them रात को 10 बजे and expect a reply because that's their family time. So don't intrude into their personal space. That is what I would like to say on this topic. So I hope I have answered the question. Yes, ma'am. Ma'am, can I take one more question if you allow me? Yes, please. Madam, the mention is no, the name is not mentioned here, but I will take question. How to improve the performance of the people with attitude in a team? How to improve the performance? How to improve the performance of people with negative attitude in a team? Okay. So people, there will always be people who are not so gung-ho, who are not so, ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसे वाले होंगे, हमेशा ही होंगे, हर टीम में होंगे. किस हद तक वो नेगेटिव है, that is what we need to gauge. Of course, it's a very subjective thing. But I think when it comes to someone with a negative attitude, it is very important to understand why do they have that negative attitude. Are they people who are negative in general? अगर वो नेगेटिव हमेशा ही है, वो हर चीज को लेके नेगेटिव है एंड दे आर लाइक क्या ही फर्क पड़ेगा, क्यों ही करना है, इफ देयर दोस काइंड ऑफ पीपल, देन देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट. एंड आई थिंक टू डील विद दोस काइंड ऑफ पीपल इट्स ईजियर कि आप उनको एक साइलो में ही रखो, कि वो अपनी ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब में नहीं फैलाएं. तो यू गिव देम एन असाइनमेंट एंड से कि आप ये काम कर लो और जब हो जाता है तो आप हम लोग को बता दो, or probably send an email or whatever. So something like that can be done for someone who is a very negative person in general. And it's very important to understand कि हम टीम में काम कर रहे हैं, this is a time bound project. If you feel that this is a very long project and this is something which will go on for a long time and the team cannot handle someone who is having such a negative attitude, either look for a replacement. If you feel कि यार हमारे पास तो bandwidth ही नहीं है कि हम उसको बैठ के समझाएं कि आपके कारण लोग अफेक्ट हो रहे हैं and overall team morale down जा रहा है. But if you feel you have the time also and this person is receptive to the ideas also, try to understand why are they so negative. Do they not have any motivations? Motivation हर किसी के लाइफ में होते हैं. It is only important to understand कि इनको क्या मोटिवेट करता है और इनको जो टाइप की चीजें मोटिवेट करती है. अगर इनको लगता है कि इनको पोजीशन ऑफ पावर मोटिवेट करता है, इनको अगर आपने टीम लीडर बोला तो दे विल वर्क सो वेल. एंड अगर आपने बोला कि ये टीम मेंबर है, देन दे विल ऐसे मुंह फुला के बैठे रहेंगे और कैसे तो करके काम करेंगे. You have to understand what is their motivation and what is the underlying problem for this negative attitude. If it is something which is easily solvable, for example आपका रोल चेंज कर देते हैं, ओके आपको ये चेयर पे नहीं वो चेयर पे बैठना है, इफ यू फील इट इज समथिंग एज पेटी और एज सिंपल एज दैट, देन आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर एंड हमें उनकी विशेस फुलफिल कर देनी चाहिए. बट इफ इट इज समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, देन इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल मोटिवेट देम, या इनको क्या चीज से खुशी मिलती है, वो टाइप की चीज अगर इफ इट इज इन आवर पावर, इफ वी कैन डू दैट, लेट्स डू इट. एंड इफ नॉट, देन इग्नोर or find a substitute. If it is like finding a substitute, I feel should be the last resort because somewhere it sends a wrong impression कि team members are replaceable. And I'm sure कि चाहे किसी की कैसी भी attitude क्यों ना हो, the first reason why they are part of the team is because they're bringing something valuable to the team. शायद उनको कोई चीज की ऐसी knowledge है जो हम में से किसी के पास नहीं है. So it is a judgment call. इट इज अ जजमेंट कॉल कि हमें इसको किस तरीके से हैंडल करना है एंड इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. सो आई थिंक आई हैव सेड अबाउट द डिफरेंट इंस्टेंसेस which can be taken into consideration, and I hope that this question also gets answered. Yes, ma'am. Ma'am, postgraduate student Miss Dipali Sabkal from Bombay College of Pharmacy asking one question.
Sometimes it happens that we are very interactive with the other person, but they tend to be rude and hesitate to exchange idea. How do we start building relationship with them so as they become open to exchange the same? Okay. So again, this is how people are. There will be some जो एकदम दिल खोल के अपने आइडियाज बताते रहेंगे बिकॉज दे आर वेरी सिक्योर अबाउट देयर आइडिया. दे नो कि उस आइडिया को सही तरीके से काम कराने वाली जो चाबी है वो सिर्फ उनके दिमाग में है. सो दे आर प्रीटी सिक्योर अबाउट इट एंड दे वांट टू शेयर देयर आइडियाज विद सो मेनी पीपल. या तो समवन बिल्ड्स इट फर्दर फ्रॉम देयर, या तो उनको कोई चीज की हेल्प मिल जाए. तो मैंने क्योंकि इतने लोगों को बताया तो इसलिए मुझे उस चीज की हेल्प मिलेगी. कोई कॉमन नॉलेज वाले या कॉमन एक्सपीरियंस वाले लोग सारे साथ में आ जाएंगे. बट along with this there will also be people who are very insecure, who are very hesitant to share their information because they're constantly trying to judge you कि आप उनकी आइडिया चुराने तो नहीं आए हो. This is how they think. You cannot do much about it. Only thing that you can do is build trust. And if you really feel that this person is actually a powerhouse of ideas, this person is so knowledgeable that इनसे मैं खोद के अगर पूछूंगी तो सच में मुझे बहुत brilliant insights मिलेंगे, then what you need to do is invest your time in them. जैसे एक रिलेशनशिप, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो मैं एग्जांपल ले रही थी पहले भी, आप एक दूसरे में जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपका रिश्ता तगड़ा होगा. This is the exact same thing. If there is someone who is hesitant to share their ideas, who does not trust, क्योंकि उनके साथ शायद पहले कभी धोखा हुआ है, किसी ने उनकी आइडियाज को अपनी आइडियाज बना के बहुत ही अच्छी चीज कर ली और लाइफ में आगे चले गए. सो यू डोंट नो व्हाट देयर स्टोरी इज. यू डोंट नो उनके साथ क्या बीता है और उनको कैसा महसूस हुआ वो समय पे. सो बी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस. एंड आप किसी दूसरे एडल्ट के दिमाग से जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल करके तो आइडियाज निकाल नहीं सकते. सो द ओनली क्लेवर वे ऑफ डूइंग इट इज गिव देम टाइम. And by time matlab invest your time in them. Keep communicating, keep sending them ideas, keep sending them links. You be the giver and let them be at the receiving end. When they see कि आपने उनको इतना सारा वैल्यू दिया है तो मे बी कल जाके वो खुद आप पे ट्रस्ट करेंगे और बोलेंगे कि अच्छा तुमको ये चीज में हेल्प चाहिए थी, लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट. सो ये सारी चीजें जनरली हेल्प करती है. आई हैव सीन इन इंस्टेंसेस, I have seen when I have guided my clients on topics like these, and I hope that this answers your question. Yes, ma'am. Ma'am, one more question is there by Devrat Kumar. He is asking whether artificial intelligence can beneficial or harmful in our networking. Okay. What do we mean by artificial intelligence? If it can be elaborated. He's asking artificial intelligence can beneficial or harmful in our networking. But understand what is the artificial intelligence that sir is talking about. So एक example अगर मुझे मिल सकता है तो शायद मैं भी better समझ के better जवाब दे सकूं. Devrat sir, if you can please elaborate what do we mean by artificial intelligence in networking? Do you mean chatbots? Sir, are you there with us in the meeting? Yes. Hello. Yes, sir. Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, thank you so much. First of all, this is a very interactive session given by you. Thank you. Yes, sir. Your question. Ma'am, my question basically correlate with the artificial intelligence, na? My concern particular artificial intelligence like just as you told कि हमने अभी कुछ मैसेज हमने कुछ ड्रॉप किए हैं किसी पर्सन पर्टिकुलर्स के लिए कुछ मशीनरी
आर्टिफिशियल मशीनरी से हम कुछ पर्टिकुलर अपना नेटवर्किंग डेवलप कर रहे हैं, तो क्या इसमें हमारा जो इमोशनल और इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या इससे पर्टिकुलर हमें कोई रिलेशन या कोई हमारी नेटवर्किंग पर इफेक्ट पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन में कोरिलेट करना चाह रहा था बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्या कुछ गिव मी सम सजेस्ट। सर मैं जो समझ रही हूँ क्वेश्चन को, कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम्स के कारण क्या मेरा नेटवर्किंग इम्पैक्ट हो सकता है? सो मे बी डू यू मीन टू एल्गोरिथम्स? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, सो एल्गोरिथम्स तो सर देखिए, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजें एल्गोरिथम के बेसिस पे ही काम करती है, बिकॉज करोड़ों लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एंड थ्रू दीज एल्गोरिथम्स व्हाट द कंपनीज आर ट्राइंग टू डू इज कि हर एक यूजर को जो इंस्टाग्राम खोल रहा है या जो लिंक्डइन खोल रहा है, उसको उसके पसंद का कंटेंट दिखना चाहिए, उसको उसके पसंद के लोग दिखने चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे एप्लीकेशन पे स्पेंड करे, ताकि हम कल जाके इसको जब मोनेटाइज करें, हम एड्स दिखाने की अगर कोशिश करें या कोई पेड कंटेंट हम लोगों को दिखाने की कोशिश करें, तो देयर इज अ हायर चांस दैट द यूजर विल स्पेंड द मनी and we will get profit out of it. So that is the reason why these systems have algorithms in place for as a basis. अब एल्गोरिथम्स तो जो है इट इज अ ब्लैक बॉक्स, ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ एल्गोरिथम्स क्या काम करते हैं, एंड एल्गोरिथम्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग भी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, हमारी मेंटालिटी चेंज हो रही है, हमारा थिंकिंग चेंज हो रहा है, and the way we interact with the system, we interact with the application, that also keeps on changing. So the algorithm is also constantly changing. तो इसलिए जो पहले हम कहते थे कि हैशटैग अगर डाल दिया इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डाल दिया, तो पहले जितने हमें रिजल्ट्स या आईबॉल्स मिलते थे, आज की तारीख में उतने मिलते ही नहीं है, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स जुड़ चुके हैं इसके साथ. सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट. हम लोगों को इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, हमने जो भी इमेज डाली या हम लोग जो टेक्स्ट डाल रहे हैं, हम जो नॉलेज हमारे नेटवर्क तक पहुंचाना चाह रहे हैं, व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? इफ दैट इंफॉर्मेशन इज सो गुड, then automatically people will engage, people will like, people will comment. कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अच्छे कंटेंट को देख के उसको सिर्फ स्क्रॉल कर देगा और आगे चले जाएगा. There will be some people जो out of other negative emotions, जिनको ऐसा लगेगा मैं क्यों इसको लाइक करूं, बट वैसे लोगों को तो खैर आप पहले भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते थे और आज भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे. बट बिकॉज ऑफ दीज एल्गोरिथम्स हम जिस तरीके से इनको बीट तो नहीं कर सकते, बट a way around these algorithms is probably developing such a rich content which adds so much value to the people that are part of your network कि वो अपने आप उसको लाइक करें, और क्योंकि उनने आपको लाइक किया, तो now the algorithm will become your friend and these people will begin to see your content on a regular basis. So I hope that this clarifies this point. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Nidhi ma'am, for such a lovely answer. Now, over to you, Vivek sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nidhi ma'am. Thank you, Shubhangi ma'am. I would now like to call upon Ujjwala Shinde ma'am to felicitate Nidhi ma'am. Over to you, ma'am. Yeah, thank you. Yeah, thank you, Dr. Vivek and Dr. Shubhangi, and thank you, Nidhi, for such a lively session. As rightly quoted by Steve Jobs, great things in business are never done by one person. Nidhi, we appreciate that you drove home a point that cohesiveness among the team members is right mantra to have a winning team posed for success. And also coming from means me or from most of our faculty or participants, they are coming from pharma background. When we are working on research project, networking becomes a very important. And thank you, Nidhi, for such a wonderful session, graciously accepting our
invitation to be a guest speaker for this FDP. As a remembrance of this FDP on behalf of organizing committee, we would like to virtually acknowledge you. Our research scholar, they have planted a sapling of neem in our BCP garden on behalf of you. Please accept this. This one, Harshali, could you play? So this is the idea of our FDP. How nice. Yeah, thank you, Nidhi. Such a lively session. Thanks again. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. And I'm so glad because it was an interactive session. So even the speaker feels happy. Yeah. So I was telling you, your speakers, they will really make your session very interactive. And I thank all our speakers also to be very proactive in this interaction. I think we would like to have some one photo with our participants. Vivek, over to you. Thank you, ma'am. I'm just allowing camera for all attendees so that they can switch on, all the participants can switch on their videos and we can have a photo of everyone with our speaker. So request everyone to please switch on your cameras for a quick photo. Okay. I will also take one selfie with you guys. Yeah, sure. Yeah, we'll share this photo to you also, Nidhi. No problem. Yeah. Because social proof is very important. Yes. All right. I think we've also clicked the photo and we'll be sharing this with you too, Nidhi ma'am. So thank you so much, everyone. And thank you, Nidhi ma'am, again on behalf of organizing committee and Bombay College of Pharmacy. So I'd like to close down the session and we break for lunch. Before we break for lunch, there is actually one announcement. So tomorrow for the valedictory function, we would be inviting participants to share their views about this FDP and how their experience has been throughout their journey with us. So any participant who is interested to come on the platform and share their views with the audience, they are requested to get in touch with the coordinator of the FDP, Dr. Ujjwala Shinde, by tomorrow morning. Please give in your names to her so that we can invite you, share your views with all of us. Thank you so much once again and see you back at 2:45. The next session we would start exactly at 2:45. Thank you again.